चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है, नेक्स्ट हेडिंग इज राइबोसोम। नेक्स्ट हेडिंग इज राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम का स्टडी तब पॉसिबल हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट होके वर्किंग हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने से पहले हम लोग राइबोसोम को स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलाडे in 1953. It was first time observed by George Palade in 1953 as dense granular structure, which is not bounded by any membrane, which is not bounded by any membrane. ठीक है, कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे। It was first time observed by George Palade in 1953 as dense granular structure, not bounded by a membrane, not bounded by any membrane. Next one लिखिए, its study become possible after the construction of electron microscope. Study become possible after the construction of electron microscope. ठीक है ना, अगर राइबोसोम को आप देखेंगे तो राइबोसोम जो है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज आरएनए और आरआरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए जो है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। दैट मींस राइबोसोम इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स that it is consist of nucleic acid rRNA or ribosomal RNA and protein. Ribosome is nucleoprotein complex. Ribosome is nucleoprotein complex that is it consists of nucleic acid rRNA, R stands for ribosomal, rRNA and protein. nucleic acid rRNA and protein. हाँ बताओ करेंगे, क्या पूछ रहे बताओ। जो राइबोसोम होता है वो दो चीज का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड rRNA एंड प्रोटीन का। तो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये जो rRNA है, ठीक है,
इसका जो साइट ऑफ सिंथेसिस है, ये जहां पे बनता है, ठीक है, ये जो आरआरएनए है, ये जहां पे बनता है वो है न्यूक्लियोलस, and that's why nucleolus is also referred as ribosome factory. Write down. Site of synthesis of rRNA, site of synthesis of rRNA is nucleolus, and that's why nucleolus is also referred as ribosome factory. Nucleolus is also referred as ribosome factory. देख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप राइबोसोम को देखेंगे, ठीक है, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट राइबोसोम इज 80s, consist of larger subunit 60s and 40s, and in case of prokaryote it is 70s, that is larger subunit 50s and smaller subunit 30s. Third one, in case of eukaryote ribosome is 80s, consist of larger subunit 60s and smaller subunit 40s. Whereas in case of prokaryote, it is 70s, larger subunit 50s and smaller subunit 30s. Larger subunit 50s and smaller subunit 30s. Here S stands for Swedberg's unit or sedimentation coefficient. S stands for Swedberg unit or sedimentation coefficient. ठीक है, अगर आपको याद होगा rRNA, small r, not capital R. It is small r then RNA, where small r stands for ribosomal. Okay. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट आपको बताया था, याद है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि किस स्पीड ऑफ सेंट्रिफिकेशन पे वो सेडिमेंट करता है, वो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है या सेडबर्ग यूनिट जिसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, वैल्यू ऑफ एस, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, वैल्यू ऑफ एस provides indirect information about
Size and density of ribosome. Size and density of ribosome. ठीक। अगर आप राइबोसोम के फंक्शन को देखें कि राइबोसोम का काम क्या है, तो राइबोसोम ऐसे समझो कि एक नाटक हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी नाटक या ड्रामा होगा उसके लिए स्टेज चाहिए, वो स्टेज जो है वो राइबोसोम प्रोवाइड करता है। ठीक है, डाउन। राइबोसोम प्रोवाइड्स स्टेज, राइबोसोम provides stage on which drama of protein synthesis is performed. Ribosome provides stage on which drama of protein synthesis is performed. हो गया, लिख लिया सबने? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हेडिंग इज साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन होता क्या है? ये जो साइटोस्केलेटन है, दिस इज एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माने साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस, वो फिलामेंट प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। राइट डाउन। साइटोस्केलेटन consists of elaborate network of filamentous proteinaceous, elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in cytoplasm, present in cytoplasm. It consists of microtubules. It consists of microtubules, which is made up of tubulin protein, microtubule, which is made up of tubulin protein and microfilament, which is made up of actin and myosin. Microfilament, which is made up of actin and myosin. Next heading is function of cytoskeleton. First point लिखिए, it provides mechanical support first लिखिए, it provides mechanical support second लिखिए, it helps in maintaining shape of cell it helps in maintaining shape of cell. Next लिखिए, it helps in motility
Motility means locomotion. It helps in मोटिलिटी. मोटिलिटी का मतलब होता है लोकोमोशन. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सीलिया एंड फ्लैजेला. नेक्स्ट हेडिंग इज सीलिया एंड फ्लैजेला. तो ये सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है? तो समझ लो, सीलिया और फ्लैजेला जो है, दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ. ठीक है. These are extension of plasma membrane present on the surface of cell. Plasma membrane extend करके बनाता है, सेल के सरफेस पे होता है. सीलिया जो होता है स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस इन नंबर, मोर इन नंबर. ठीक है. छोटे साइज का होगा, ज्यादा होगा. सीलिया का दो काम. पहला काम सीलिया का है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मीडियम. मतलब जिस मीडियम में है वो ऑर्गेनिज्म, उसमें सीलिया है तो मूवमेंट कराएगा मीडियम का. क्यों? कि उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल उसके पास आना में हेल्प करता है. दूसरा, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है. Whereas flagella is longer than cilia, less in number, and the only function of this is to help in locomotion. लोकोमोशन में ही सिर्फ हेल्प करता है, मीडियम को मूव नहीं कराता है. तो डन. सीलिया एंड फ्लैजेला, these are hair like outgrowth. These are hair like outgrowth present on the surface of cell. Present on surface of cell. Next one लिखिए. These are extension of plasma membrane. These are extension of plasma membrane. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ लीजिए. सीलिया इज मोर इन नंबर. Cilia is more in number, smaller in size. Cilia is more in number, smaller in size, helps in movement of medium, helps in movement of medium, and also helps in locomotion. Also helps in locomotion. Whereas flagella is longer than cilia, less in number, and only helps in locomotion. Only helps in locomotion. ठीक है. अब देखो, अब इसे थोड़ा समझ लेना, फिर इसके बाद फिर लिखें. देखो, जब सीलिया और फ्लैजेला का आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, मतलब आपने सीलिया और फ्लैजेला का ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. ये जो है, दिस इज कोर. This is core, or this core is also referred as exonym. Now, this core or exonym consists of 9 peripheral microtubular doublets. मतलब दो के ग्रुप में होगा माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसको कहते हैं माइक्रोट्यूबुलर डबलेट. तो कितने होंगे टोटल? 9. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9.
So these are 9 microtubular doublets. These are microtubular doublets. ठीक है? And these doublets are arranged parallel to the long axis. ये ऐसे करके आप देखिए पाइप है ऐसे, ठीक है? So they are arranged parallel to this long axis, and then there is 2 central singlets. So these are central singlets. Central singlet. तो 9 peripheral doublet हो गए, 2 central singlet हो गए, and that's why this is referred as 9+2 arrangement. We call it 9+2 arrangement. अब देखो, अब क्या होता है? These peripheral doublets are joined by inter-doublet bridge और linker. ठीक है? तो ये आपस में joined होंगे with the help of inter-doublet bridge. This is inter-doublet bridge, which is also referred as linker. ठीक है? And central singlets are joined by singlet bridge. ठीक है ना? उसके बाद क्या है कि जो ये सेंट्रल सिंगलेट है, these are surrounded by central sheath. ठीक है, ये दोनों जो है सेंट्रल शीथ से, एंड देन all the peripheral doublets are attached to this central sheath with the help of a radial spoke. This is your radial spoke. So in total there are 9 radial spoke. ठीक है? Okay? So this is structure of cilia or flagella. समझ में आया सबको? Write down. Write down. In transverse section, a cilia or flagella consists of a cilia or flagella is surrounded by plasma membrane, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोर और एक्सोनिम लिखा हुआ कोने में, कोर और एक्सोनिम consist of 9 peripheral microtubular doublets which runs parallel to long axis. In center, two singlets are present. And that's why this arrangement is known as 9+2 arrangement. That's why this arrangement is known as 9+2 arrangement. ठीक है, लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Peripheral doublets are
peripheral doublets are joined by inter-doublet bridge by inter-doublet bridge or linker, inter-doublet bridge or linker, and central singlets are joined by and central singlets are joined by singlet bridge. Central singlets are joined by singlet bridge. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Central singlets are surrounded by central sheath are surrounded by central sheath and all peripheral doublets are arranged to this central sheath, or peripheral doublets are attached to the central sheath with a radial spoke, So in total there are 9 radial spoke. ठीक है, इसको बना लीजिए डायग्राम जल्दी. So in total there are 9 radial spoke. In total there are 9 radial spoke. जल्दी से डायग्राम बना लीजिएगा. बन गया. चलिए, next heading is centrosome and centrioles. ठीक है, centrosome and centrioles. ठीक है, so it is present only in animal cell. Pattern first point लिखिए, it is present only in animal cells. ठीक है, next point लिखिए. A centrosome usually consists of two cylindrical centriole, which are placed perpendicular to one another, That's why it is also referred as diplosome. That's why it is also referred as diplosome. Next point लिखिए. Centrosome
or sorry, centriole is not surrounded by any membrane, is not surrounded by any membrane, and it is surrounded by amorphous amorphous pericentriolar material, amorphous pericentriolar material. जब इसका आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे, एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई डिफाइंड मॉर्फोलॉजी ना हो, कोई फिक्स मॉर्फोलॉजी ना हो, उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस। और जो मटेरियल उसको कहते हैं पेरिफेरी में होता है, इसलिए कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर, और कुछ नहीं, ठीक है ना। जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ये तो एमॉर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल है ही है, इट हैज 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स, ठीक है, ऐसे करके 9 ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है, which are tilted at the angle of 45 degree. Pradhan, in transverse section, it consists of 9 peripheral microtubular 9 peripheral microtubular triplet, which is tilted at angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है, ऐसे मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये एक ट्रिपलेट है, तो बेस वाले को ए कहते हैं, उसके ऊपर वाले को बी, उसके ऊपर वाले को सी, ठीक है। फिर ये दूसरा ट्रिपलेट है, इसमें ए बी सी, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे करके जुड़ा होगा ए से सी, ठीक है। तो ये ए जो है इस सी से ऐसे जुड़ा होगा, फिर ये इससे 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 जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, और ये इससे जुड़ा होगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज एसी लिंकर। राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर triplets are joined with each other, with the help of AC linker, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर में क्या होता है, यहां पे सेंटर में देयर इज ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर व्हिच इज रिफर्ड एज हब, ठीक है। तो इन सेंटर वी हैव प्रोटीनेशियस, प्रोटीन का बना हुआ, proteinaceous structure known as hub, and all peripheral microtubular triplets, ये जितने भी ट्रिपलेट है are attached to this hub with the help of radial spoke, ऐसे करके इससे ऐसे अटैच होगा, ठीक है। दिस इज योर radial spoke, and because of this
arrangement, it gives appearance of a cart wheel. बैलगाड़ी के चक्के की तरह लगता है. Throw down. In center, proteinaceous hub is present. In center, proteinaceous hub is present. To which peripheral to microtubular are attached. Microtubular triplets are attached with the help of radial spoke. With the help of radial, to which peripheral microtubular triplets are attached. Microtubular triplets are attached with the help of radial spoke. And because of this, it gives appearance of a cartwheel. Because of this, it gives appearance of a cartwheel. बैलगाड़ी के चक्के की तरह रखता है. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? तो जो सीलिया और फ्लैजेला है, ठीक है, वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी, एंड दैट बेसल बॉडी इज फाउंड बाय दिस सेंट्रियोल. ठीक है. दूसरा चीज, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, दिस सेंट्रियोल प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर. अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. थोड़ा डन. फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल पहला लिखिए. It forms basal body from where cilia and flagella originates. It forms basal body from where cilia and flagella originates. Next one लिखिए. In case of second लिखिए. In case of animal cell, it provides site of attachment. It provides site of attachment to spindle fiber. It provides site of attachment to spindle fiber. In case of animal cell, it provides site of attachment to spindle fiber during cell division. बैक्टीरिया में होता है माइटोटिक. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था बाइनरी फ्यूजन में वहां स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है. याद है बाइनरी फ्यूजन जब बताया था तो स्पिंडल फाइबर भी पढ़ेंगे. अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला. ठीक ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए न्यूक्लियस. नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिफर्ड एज, राइट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिफर्ड एज brain of cell. Nucleus is also referred as brain of cell, as it controls functioning of cell, as it controls functioning of cell. Next one लिखिए, it was first time observed by, it was first time observed by Robert Brown in 1831. It was first time observed by Robert Brown in 1831. Next one लिखिए, function of nucleus, sorry, role of nucleus, function नहीं, role of nucleus in controlling, role of nucleus in controlling function of cell was established by J. Hammerling. आपको पहले बताया हुआ है, was established by J. Hammerling. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Fleming observed that, next पॉइंट लिखिए, Fleming observed content of nucleus Fleming observed that content of nucleus can be stained. Staining समझते हो ना आपसे, can be stained by basic dye, BASIC, acid base वाला, can be stained by basic dye, and he named it chromatin. He named it chromatin. तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है वो कैसा है, एसिडिक है, तभी तो बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है। समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस, इसमें दो चीज बच गया, एक न्यूक्लियस बचा है, दूसरा माइक्रोबॉडीज बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, होपफुली, ठीक है, और अगला चैप्टर भी हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, थैंक यू।